किसी को याद नहीं है? या किसी को बोलना नहीं है? I guess second one is the right answer. Okay, so let's not waste our time and let's move ahead. तो हमने लास्ट टाइम वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, दैट व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी. एक्चुअली इन अ वे हमने देख ही लिया था, बट इट्स लाइक वी नीड टू वी वर इन वी हैवंट अंडरस्टूड इट कि इसे वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ओके, सो नाउ let's start with virtual memory again. That virtual memory just creates illusion that a process whose size is more than RAM. Let's say if there is a process of size 50 MB or 50 GB, okay, and I'm having my RAM of 8 GB, okay. तो प्रोसेस की साइज रैम से मेरी बहुत बहुत ज़्यादा है. द साइज ऑफ रैम इज़ ग्रेट, द प्रोसेस साइज इज़ वेरी मच great than RAM. But even in this scenario, the user is having illusion that he can run his complete process in main memory, right? That is your RAM. So उसे ये पता नहीं चलता कि उसका प्रोसेस मतलब 8 GB या 4 GB और कोई स्पेसिफिक साइज सेगमेंट्स में या कोई स्पेसिफिक पेजेस में वो मेन मेमोरी में जा रहा है, राइट? एंड देन द प्रोसेस इन दैट वे द प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था पेज फॉल्ट का भी, कि हियर वी डू हैव समथिंग कॉल्ड पेज फॉल्ट, राइट? पेज फॉल्ट क्या होता है? Let's say if a CPU is asking for any page which is not present in main memory, hence we need to take it from where? Secondary memory, right? तो हमें यहाँ से एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है, और उसको फिर मेन मेमोरी में डालते हैं एंड देन इट इज़ गिवन टू CPU. ओके, सो इफ प्रोसेस इज नॉट देयर देन हम मेन में सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं, मेन मेमोरी से फिर CPU से एक्सेस करता है. So obviously, in this scenario, even if some CPU is asking for some process Q, okay, so it is already here. So यहाँ पे भी थोड़ा एक्सेस टाइम कुछ होगा और ये प्रोसेस के लिए इतना सारा एक्सेस टाइम जाएगा. Hello, sir. Okay, okay, so in two condition, हाँ बोलो. Sir, we are having NVIDIA deep learning session now. ऐसा है? Yes, sir. Not all students, those who have registered. Those who have registered, तो जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको बोलो कि एक बार अभी आप इसमें आ जाए और मेरे को एक बार बता के चले जाए कौन कौन है. सर मैं हूँ 111 और 119 भी है यहाँ पे 119? यस सर. 119. ओके, और सर 106 भी है. कहाँ है वो 106? वो यहीं पे है सर, मीटिंग में. Yes, sir. उसको बोलो रिप्लाई करने के लिए. कहाँ है? Sir, I have raised my hand. ओके ओके, 106 यश पटेल, राइट? ओके, यू Yes. तुम तीनों, राइट? ओके, यू कैन गो. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you. ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, राइट, कि एक्सेस टाइम भी यहाँ पे लगेगा. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सेस टाइम. सो again, CPU is asking for any data, let's say P1 which is not present in which we search in page table, which is वहाँ से हमको page table से हमको ये पता चलता है कि वो main memory में नहीं है. So we search in page table but we don't get it, right? So but if page P1 is not present, तो हमने उससे page fault किया कि page fault occur हुआ, that scenario is called page fault. So if there is a page fault scenario, we are having page fault service time where trap is generated. Okay, so whenever a page fault is whenever we are having a page fault, okay, a trap is generated. Okay, ट्रैप इंस्ट्रक्शन होता है और उसके बाद योर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूजर टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, जब तक जो आपका CPU प्रोसेस कर रहा था तो
आपका जो कंट्रोल था वो था यूजर के पास। नब जैसे ही ट्रैप इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड as due to page fault, the execution control or the complete control is transferred to operating system. So that now operating system comes into the picture. Okay, operating system comes into the picture. Okay, and a trap is a kind of interrupt instruction, right? एक type का interrupt है वो. It just simply interrupt. So what happens, your context, you can say that your context has switched here. Okay, so control is simply taken by operating system, nothing else, and user who was running the process is having no control over that process. Now operating system is having the control over that process. Now operating system, what this operating system will do, अब ये प्रोसेस याद रखना, ये प्रोसेस भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इट हैपेंस राइट, दैट सो व्हाट this operating system is going to do, operating system will authenticate. अब क्या ऑथेंटिकेट करेगा, operating system will authenticate that the user who is demanding for the next page, okay, is perfect, is correct user or not. मैं यहाँ से वापस से एक ड्राइंग करता हूँ, ओके, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड सिनेरियो क्या है। सीपीयू ने कोई पेज मांगा, ओके, हमने पेज टेबल में उसको सर्च किया, सीपीयू ने एक पेज मांगा, वी सर्च इन पेज टेबल, ओके, अकॉर्डिंग टू द पेज टेबल इट इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें पेज फॉल्ट मिला। सो फॉर पेज फॉल्ट द एज ये जो यूजर है योर दैट प्रोसेस, ओके, इन अ वे दैट प्रोसेस जब सीपीयू नेक्स्ट पेज के लिए डिमांड कर रहा है, आई गेस किसी का माइक ऑन है, ओके, सो जब ये नेक्स्ट पेज के लिए डिमांड कर रहा है, दैट यूजर इज डिमांडिंग फॉर द नेक्स्ट पेज, जब सीपीयू डिमांड करता है, सो सीपीयू का डिमांड ऑब्वियसली इट गोज टू द यूजर और टू द प्रोसेस, राइट। सो मतलब यूजर का एनवायरनमेंट में जाती है, एंड देन इफ यूजर इज करेक्ट हु इज आस्किंग फॉर द नेक्स्ट पेज, मतलब ऑथेंटिकेशन करता है कि जो प्रोसेस या जो यूजर नेक्स्ट पेज की डिमांड कर रहा है वो सही है कि नहीं, ओके, इट हैज सम ऑथेंटिकेशन वे। Okay, so it will simply authenticate, and if everything goes correct, so now what operating system will do, operating system जाएगा secondary memory में, okay, secondary memory में जाएगा, operating system will go to the secondary memory and brings into the main memory, operating system will go into the secondary memory, वो पेज को ढूंढेगा जो पेज चाहिए, एंड देन इट विल ट्रांसफर इट इनटू व्हाट, मेन मेमोरी, उसे मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेगा। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से, अरे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उसे ट्रांसफर करेगा, ओके, मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में द ऑपरेटिंग सिस्टम विल नाउ ट्रांसफर इट, राइट। ये होगा पूरा, दिस विल बी प्रोसेस, एंड वंस इट इज ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर जैसे ही हो जाता है, ओके, ये ट्रांसफर जैसे ही हो जाता है, द कंट्रोल इज अगेन गिवन टू द यूजर, ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में से निकल जाता है, okay, so this is what happens whenever a page fault occurs, okay, and this is how your page fault is serviced, right। आपका पेज फॉल्ट कैसे सर्विस होता है, इस तरीके से सर्विस होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस, राइट। सो ये अगर हमारी कंप्लीट प्रोसेस है, राइट, सो इफ ये अगर हमारी प्रोसेस है कंप्लीट, तो हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा। लेट्स से एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज योर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ओके, सो ऑब्वियसली फॉर द केस के पेज फॉल्ट नहीं हुआ है, simply you are going to access it from main memory. Now one more most important thing, ये एक डिफरेंस है जो हमेशा याद रखना चाहिए, कि अगर मैं रैम में से कोई पेज या कुछ डेटा एक्सेस करता हूँ, व्हेन आई एम एक्सेसिंग माय रैम, द एक्सेस इज डन इन नैनो सेकेंड्स, while when something is accessed from secondary memory, it actually is done in millisecond। ओके, कोई मुझे बता सकता है नैनो सेकंड और मिली सेकंड का मतलब क्या होता है।
एनी वन ऑफ यू? नैनो सेकंड और मिली सेकंड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9 and 10⁻3. ओके, कौन सा 10⁻⁻9? ये, राइट? Yes, sir. 10⁻⁻3, right? So obviously this is too small, right? This nanosecond is too small in front of this milliseconds, right? So ये एक एक्सेस टाइम है. So let's say कि किसी ने बोला है कि I am having p times, okay, page fault. p times मतलब लेट्स से इन एग्जाम अगर ऐसा बोलते हैं कि 100 में से 10 बार पेज फॉल्ट होता है. सो दिस इज योर p. देयर इज 100 एक्सेस. ओके, ये एक्सेस है, नंबर ऑफ एक्सेसेस. आउट ऑफ 100 एक्सेस देयर इज 10 पेज फॉल्ट्स. मतलब ये एक स्टेटिस्टिक्स है कि आपके पास है कि 100 एक्सेस में से 10 पेज फॉल्ट होता है, राइट? सो इफेक्टिव एक्सेस मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर p टाइम्स यानी 10 आपका पेज फॉल्ट है, इफ इट इज ये 10 आपका पेज फॉल्ट है, तो p टाइम्स आपका पेज फॉल्ट सर्विस टाइम होगा. आप पेज p टाइम्स अगर 10 बार पेज फॉल्ट हुआ तो 10 बार आप पेज फॉल्ट को सर्विस करोगे, तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 10 टाइम्स आएगा. तो अगर p टाइम्स है तो p इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ओके, विच विल बी मोस्टली इन, कौन से में होगा? मोस्टली इन मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड. पेज फॉल्ट सर्विस टाइम. अच्छा, मेरा क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ. कैन योर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कैन बी इन नैनो सेकेंड, यस और नो? Guys, you need to respond now. Can our page fault service time in nanosecond? Yes or no? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम नैनो सेकंड में हो सकता है? देव, निसर्ग, केवल, किसी को जवाब नहीं देना. ओके फाइन. ऋषित. ओके, इट्स अप टू यू देन. ओके, सो जैसे लास्टली हमने डिस्कस किया पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ओके, जो हमने यहाँ पे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम डिस्कस किया. पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ पेज फॉल्ट सर्विस टाइम? इट इज एक्चुअली इन पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इट इज एक्चुअली फर्स्ट गोइंग टू एक्सेस फ्रॉम मेन सेकेंडरी मेमोरी, राइट? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी आने वाला. और मैंने अभी अभी बोला, राइट, दैट आवर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम में, अरे सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस टाइम में वो मिली सेकेंड्स में ही होता है. सो ऑब्वियसली योर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम विल बी ऑलवेज इन मिली सेकेंड्स or greater than that, because your main memory secondary memory access time is that, okay. Plus now as we are talking effective memory access time, तो अगर 10 बार पेज फॉल्ट अगर हुआ है तो 10 बार हम क्या करते हैं? हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं, फिर मेन मेमोरी से एक्सेस करते हैं. लेकिन लेट्स से p टाइम्स यू आर हैविंग पेज फॉल्ट, दैट मीन्स 1 माइनस p टाइम्स, दैट मीन्स 90 टाइम्स यू डोंट हैव पेज फॉल्ट. बट उसमें भी तो मेमोरी एक्सेस जाएगा, दैट इज 1 माइनस p टाइम्स, okay, into main memory access time, okay, which and this will be mostly in nanoseconds, okay, mostly it will be in nanoseconds. So this is what we happens, right? So हम
मीन्स ये वाला टाइम हमारा कम हो, राइट, ये वाला टाइम हमारा कम हो, सो दैट मिली सेकेंड्स को हम घटाएंगे तो हमारा हमारा जो इशू है थ्रेशिंग वाला कॉन्सेप्ट, ओके, ये भी कम होगा, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस इज आवर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, कि अगर मेरा पी टाइम्स पेज फॉल्ट हो रहा है, सो हैंस वन माइनस पी टाइम मेरा मुझे अपना पेज मेन मेमोरी में ही मिल जा रहा है, दैट मीन्स आई एम गेटिंग माई पेजेस इन माई मेन मेमोरी, राइट. सो अगर मुझे मेन मेमोरी में से ही मेरा पेज मिल जा रहा है तो दैट इज वन माइनस पी इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज मोस्टली इन नैनो सेकेंड्स. एंड इफ माई पेज फॉल्ट, इफ देर इज अ पेज फॉल्ट, तो क्या होगा, हमने उसे ढूंढा पेज टेबल में, राइट. सो पेज टेबल में मिला तो नहीं, बट हमने, तो फिर क्या होगा, उसे हम क्या करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में से हम यहाँ लाएंगे, मिली सेकेंड्स में होगा जो, उसके बाद रैम में होगा, ओके, रैम में कहीं पे होगा, और रैम में से वो जाएगा सीपीयू में. सो अगेन दिस इज इन नैनो सेकेंड, बट हमने यहाँ पे नैनो सेकेंड मेंशन नहीं किया ये फर्स्ट पार्ट में, क्यों, बिकॉज इट विल बी टू स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दिस. इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला एक्सेस टाइम इग्नोर कर देते हैं, बट समटाइम्स इन एग्जाम दे मे आस्क that to include this memory access time also, but it is very small in front of milliseconds, 10 raised to 3 minus 3 and 10 raised to minus 9, you can understand. So जब हम पेज फॉल सर्विस टाइम गिनते हैं उसे मिली सेकेंड्स में ही रखते हैं, सो वी यूजुअली कैलकुलेट ओनली द एक्सेस टाइम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी. हम मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम नहीं गिनते उसमें, बट इंटरनली इट हैपेंस कि मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है जो मिली सेकेंड्स में टाइम है, एंड देन दैट पेज इज गिवन टू द सीपीयू. Again, there is a memory access of nanoseconds, but it is very smaller than millisecond. Hence, we are not calculating it in our effective memory access. But in some examples, it may be externally or specifically defined to calculate it, to consider it, right? So this is your memory access time, and this is somewhere important because based on this, many questions can be asked. Based on this formula, many questions can be asked, right? So this is what your effective memory access time. Okay, so here we simply stated that if we can reduce the page fault, obviously we are going to increase our CPU utilization. Okay, because अगर मैं पेज फॉल्ट ज़्यादा होगा, लेट्स से यहाँ अगर ये पी की वैल्यू बढ़ती है, राइट, अगर ये पेज फॉल्ट ज़्यादा होता है तो उसमें होगा क्या, दैट योर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम विल इंक्रीज. ओके, और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली द वर्चुअल मेमोरी गिव इल्यूजन ऑफ ग्रेटर रैम, वो फ्लॉ हो जाएगा, राइट, इट विल बी नल एंड void. Okay, so this is what we call as concept of effective memory access time. Okay, ये आपका effective memory access time था, उसके related concepts, right, उसके related theory. Okay, I hope it is understandable what is effective memory access time. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, so moving towards the next topic, एक छोटा सा टॉपिक है इन दिस कंप्लीट स्टफ. ओके, ये सारे सिनेरियो में, okay, so in this complete scenario, okay, there is one more hardware included जो बाद में include किया गया after we having this paging concept, this inverted paging or two level paging concept or any kind of concept, right? So after that there is one buffer or usually a one cache memory. Okay, एक cache memory include की गई. That is known as TLB. It is always known as TLB. That is called translation look aside buffer. Now, why this was included? क्यों? Okay, so just let me draw one diagram. Okay, then I will start the then it will be easy for me for defining the stuff. Just a second, let me draw it.
Okay, so this is some diagram. I will be using it for giving you some minor explanations, right? So होता क्या है that in the case of a normal paging scenario, हमने जो देखा, our page lies in main memory as well as our page table also reside in the main memory. तो होता क्या है कि let's say ये मेरा main memory है. For now concentrate on blue color. Okay, so होता क्या है, let's say this is my main memory. Okay, and here I am having my pages stored, right? ये अलग अलग frames है जिसके अंदर मेरे pages भी है. तो यहाँ मान लो कि कोई P1 पेज है और इसी के अंदर पेज टेबल भी है, right? So this is my main memory. So whenever CPU is asking for some main memory, तो होता क्या है, पहले हम पेज टेबल एक्सेस करेंगे. Okay, तो once your main memory is accessed, पेज टेबल में सर्च करके उसके बाद हमें पेज के बारे में पता चलेगा. तो अगेन आई एम एक्सेसिंग माय पेजेस, राइट? अगेन आई एम एक्सेसिंग माय पेजेस. तो क्या होता है कि इन इन टोटल आई एम एक्सेसिंग माय मेन मेमोरी ट्वाइस. मैं अपनी मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस कर रहा हूँ, right? I am accessing my main memory twice, even if there is a no page fault scenario. Okay, अगर पेज फॉल्ट सिनेरियो है तो क्या होगा कि पेज एक बार मैं मेन मेमोरी को एक्सेस करूंगा और पेज फॉल्ट हुआ, then I will go to the secondary memory and the scenario continues. But अगर पेज फॉल्ट नहीं होता है तो in that scenario, if page fault doesn't happen, in that scenario what will happen कि मैंने पेज टेबल को निकाला मेन मेमोरी में से. आई एम हैविंग द पेज टेबल. उसके बाद इवन आई कैन हैव 2 लेवल पेजेस, राइट? सो 2 बार होगा, उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा. बट लेट्स कंसिडर कि आई एम हैविंग नॉर्मल पेजिंग टेक्निक. तो वापस क्या होगा, मेरे पास पेजिंग टेबल का एक्सेस हुआ, देन आई विल गो फॉर द पेजेस. अगेन आई एम एक्सेसिंग द पेजेस. ओके, सो आई एम एक्सेसिंग माई मेन मेमोरी ट्वाइस. हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे लाई करता है कि मैं एक मेमोरी को 2 बार एक्सेस करता हूँ, राइट? तो हम ये इन द यूजिंग दिस ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, what we are actually doing, what we are actually doing, uh, ideally access we are so hence ideally here we are accessing our main memory twice. Okay, and if we need x amount of time to access main memory, so in paging we will be in simple paging concept, अगर मुझे x times मुझे चाहिए x amount of time to access main memory, right? So अगर मैं simple paging concept use करता हूँ, then I will need 2x time. Okay, I will need 2x time. So this is simple, right? अगर 2 level paging हो जाएगा तो it may go to 3x और it may increase in multiplicative order, right? तो अगर 2 level paging है तो I will be accessing 2 times my page table, first outer table, one inner table, and then my page. तो मेरा 3 times हो जाएगा main memory access time, right? In the concept of 2 level paging. But in simple paging, as I just explained, I am accessing my main memory twice. So this is the scenario. This is the next scenario. So we here this TL, this translation look aside, or this specifically, okay, this is a cache memory. Again यहाँ पे लिखता हूँ. Okay, this is a cache memory. So here this cache memory is used. Now आप लोग सोच रहे होगे कि why this cache memory is used, what is different in it. उसका आंसर हम बाद में देखते हैं, राइट? वी विल सी इट. बट अगेन अभी क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं पहले. एक्चुअली ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट दिस कैश मेमोरी, अगर हम कैश मेमोरी यहाँ पे इंक्लूड करें, दैट मीन्स द एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम. Okay, RAM, if you want to access a RAM, if you want to access a secondary memory, if you want to access a cache memory, so slowest is secondary memory, which is in milliseconds, then RAM, which is in nanoseconds, and even in comparison to RAM, TLB is very fast. Okay, और कितना फास्ट है टेबल का एक्सेस टाइम, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इन व्हाट रेंज द मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी लाइज or TLB. This cache memory is basically even always called or mentioned as translation look aside buffer. एक्चुअली इसको ट्रांसलेशन लुक असाइड बोलते हैं, लेकिन एज दिस कैश मेमोरी और इसको हम ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, इसका वैसे नाम पड़ गया. सो दिस इज योर TLB. ओके, सो
instead of having page table accessing the page table from the main memory, TLB में क्या करते हैं कि that page table is actually moved into your TLB, इस बफर में यूज कर देते हैं. Okay, your page table is actually moved here. Okay, your page table is actually moved here. So अगर page table तो अगर page table अगर में है, that means if the entries of your next required pages, जो पेज फॉल्ट नहीं होता है तो की बात है, राइट. सो अगर वहां पे यानी कि टीएलबी में अगर पेज फॉल्ट नहीं है तो ऑब्वियसली वो पेज मतलब कि पेज आपके पेज में होने ही वाला है, राइट. सो सो पेज टेबल को हम टीएलबी में मूव करते हैं. सो रेदर देन एक्सेसिंग मेन मेमोरी ट्वाइस, टीएलबी में से हम डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस बनाते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट. ये टीएलबी हिट है. दैट मीन्स व्हाट कि सीपीयू ने पहले हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया. सो दिस इज योर लॉजिकल एड्रेस. नाउ दिस लॉजिकल एड्रेस इज checked into what? TLB. Okay, it is searched into TLB. If you are finding it in TLB, it is a TLB hit, hence we are generating what? Physical address. अगर physical address generate हुआ, then we are accessing it from main memory. Done. लेकिन if you don't find it in TLB, that means you are having what? TLB miss. Okay, that in that case you are having TLB miss. That means that so now moving your page table into TLB is again a decision, is again a way how you are going to move it. That size of TLB is too small. Okay, the size of TLB is too small, right? So उसमें कैसे आप manage करते हो अपना page table, that is again a question. So obviously there will be some scenario like where you are having TLB miss. Okay, so where you are having your TLB miss, अगर TLB miss होता है, that means you are not finding your required page in the translation look aside buffer, उसकी information उसमें नहीं है, राइट, कि कौन से फ्रेम में है. देन यू आर गोइंग टू योर ट्रेडिशनल वे, मतलब आप पेज टेबल को एक्सेस करते हो अगेन विच रिसाइड इन व्हाट? मेन मेमोरी में ही है वो भी, राइट. ये दोनों सेम ही है, तो अलग अलग कोई मत समझ लेना, कंफ्यूज मत होना. मतलब अगेन इन द ट्रेडिशनल वे यू आर एक्सेसिंग योर पेज टेबल, दैट इज योर दिस सिक्स्थ, एंड देन you are generating your physical address, and then your fifth step, that is your accessing from the main memory. Okay, so again यहाँ पे हमारा मोटिव क्या होगा? TLB miss को घटाना, minimize this TLB miss. Okay, but even though this access time won't affect much because TLB is much faster, तो हमारा उतना overhead बनता नहीं है. लेकिन if I am using TLB, तो you guys can understand कि अगर TLB use कर रहा हूँ तो obviously again I will be having my effective memory access time यहाँ पे कुछ अलग होगा. Why? Because I have included a buffer. Okay, so effective memory access time क्या होगा? अगर now this is completely a scenario where you are not having page fault. Okay, हम उस सिनेरियो में ही बात करें. अगर पेज फॉल्ट हुआ देन तो यू नीड टू गो इनटू योर ओल्ड वे, जहाँ पे आप क्या करोगे? यू विल बी हैविंग योर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एंड सो ऑन. सेकेंडरी मेमोरी आता है पीछे में. बट यहाँ पे लेट्स से यू आर हैविंग TLB मिस, राइट, अरे हिट. सो TLB हिट हुआ तो ऑब्वियसली एक्सेस टाइम क्या होगा? TLB हिट मतलब TLB को एक्सेस करने का टाइम प्लस एक्स क्या है? मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. ओके, दिस इज योर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. ओके, इफ TLB हिट, सो ये वाला पार्ट क्या है? अगर TLB में मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो, प्लस नेक्स्ट सिनेरियो इज TLB मिस. सो क्या होगा? TLB प्लस अगेन यहाँ पे क्या होगा? 2x होगा. एक बार TLB को आपने एक्सेस तो किया तो उसमें हमको मिला नहीं. ओके, देन obviously I'm going to access 1x for accessing page table in main memory, and then 1x for accessing page from main memory, right? So ये होता है आपका TLB miss.
and this is your complete effective memory access time. This is your complete effective memory access time, right? So this is what you can call as TLB concept, right? ये पूरा आपका TLB का concept है. Let's take one numerical based on this particular effective memory access time. मैं formula को ऊपर यहीं रखता हूँ rather than small कर देता हूँ. Okay, okay. So let's have one example. Okay, एक example ले लेते हैं कि उस on based on this particular TLB. Okay, so let's say there is a question होगा तो question में क्या दिया होगा? There is a paging scheme, okay, using TLB. Now TLB access time is 10 nanoseconds. तो let's say कि TLB का access time हमको कितना दिया गया है? 10 nanoseconds. And main memory access time is 50 nanoseconds. So main memory access time is 50 nanoseconds. Okay, what is the effective memory access time if TLB hit ratio? Okay, TLB hit ratio is 90% and there is no page fault. Okay, यानी कि हमको स्पेसिफिकली बोला गया कि हमें पेज फॉल्ट नहीं मिल रहा है. सो देर इज नो कंडीशन ऑफ पेज फॉल्ट. तो हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा? सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एंड दिस डेटा, ओके, हम हमारा इक्वेशन क्या बनेगा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल्स टू व्हाट? तो हिट टीएलबी, राइट? ऑब्वियसली हिट टीएलबी मतलब हिट रेशियो कितना है वो हमको दिया गया, राइट? सो इफ 90% इज हिट रेशियो, obviously 10% will be your miss ratio. Yes or no? Yes, sir. Right? So यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90%, okay, there is 90 by 100, okay, into TLB memory access time. यहाँ पे हिट आएगा, okay, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पे हिट लिखता हूँ, यहाँ पे मिस लिखता हूँ. ओके, ये आपका रेशियो लिखने का होगा. ओके, ये दो फॉर्मूला में आप ऐड कर देना. ओके, सो 90% हीट रेशियो, देन हीट रेशियो में क्या होगा? टीएलबी का टाइम दैट इज 10 नैनो सेकेंड्स प्लस मेमोरी मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दैट इज 50 नैनो सेकेंड्स. ओके, नाउ मिस रेशियो क्या है? 10%. ओके, इनटू व्हाट? टीएलबी का एक्सेस टाइम 10 नैनो सेकेंड. मिस है तो 50 नैनो सेकेंड फॉर एक्सेसिंग पेज टेबल, 50 नैनो सेकेंड फॉर एक्सेसिंग पेज. दैट इज फॉर व्हाट? योर सिंपल पेजिंग स्कीम. ओके, अब आई होप यू कैन सॉल्व इट आउट, राइट? सो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी इन नैनो सेकेंड्स एंड दैट विल बी योर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. आई होप इतना आप सॉल्व कर लोगे. क्या आएगा आंसर? फटाफट बताओ गिन के. व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हियर? आई होप कोई गिनती कर रहा है. बाकी सबका क्या कहना है? Sir, 65 nanosecond. Okay, so the answer is 65 nanoseconds. This is what your effective memory access time for this particular sum. Okay, so ऐसे कई sums और पूछे जा सकते हैं. बस you need to understand this formula. Concept पता होगा, formula पता होगा, then you can understand that how this formula is now created, right? So this is what your effective memory access time is. Okay, so ये हमारा हुआ टोटल इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम एंड टीएलबी का कॉन्सेप्ट खत्म यहाँ पे. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट, राइट? एंड दैट इज योर, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज योर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम.
Okay, this is your page replacement algorithm. आगे बढ़ना है क्या? आज यहाँ तक बहुत है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? Anyone? Okay, I guess no one. Okay, so what is this page replacement algorithm? Let's move to the next topic. Okay, so the page replacement algorithm is actually अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, राइट? द कॉन्सेप्ट ऑफ पेज फॉल्ट. ओके, सो पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि इन माय मेन मेमोरी और इन ऑब्वियसली इन द पेज टेबल्स आल्सो, राइट? तो जो पेजेस मैं इसमें लोड कर रहा हूँ, ओके, मेन मेमोरी में मैं जो पेजेस लोड कर रहा हूँ, ओके, दैट शुड बी ऑप्टिमम इन सेंस ऑफ व्हाट, कि मेरा पेज फॉल्ट मिनिमम हो. दैट मीन्स जो पेजेस फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हो, और दैट इज गोइंग विच इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन, दैट इज प्रेजेंट इन माय मेन मेमोरी. Okay, that remains present in my main memory, hence my page fault decreases. So कौन से पेज को लाना है आपके मेन मेमोरी में और कौन से पेज को मेन मेमोरी से रिमूव करना है, ओके, फॉर दैट ऑल्सो वी डू हैव algorithm, okay, so that we can decrease our page fault. See, this is not the only way to decrease your page fault, but this is one of the way to decrease your page fault. हमने पेज फॉल्ट डिक्रीज करने के लिए शायद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को डिजाइन जिम्मेदारी दी थी, राइट? दैट he manages in such a way that page fault occur, मतलब page fault occurs minimum, or the number of page fault becomes minimum, right? So there are several page replacement algorithms for your moving in and moving out, or swapping in and swapping out from the main memory, that is known as page replacement algorithm. Okay, so the paging concept, in the again in the stating that in the paging concept we have saw that we are dividing the process into the pages to bring it in the main memory, while virtual memory says that complete process can never be brought in the main memory at an instance of a time, but we provide illusion to the users that all the processes are in main memory, and maximum number of processes are accommodated in my main memory. That is what the illusion is provided by virtual memory, right? So according to the virtual memory, some set of pages or process are brought into the main memory, hence pages are swapped in and swapped out of the main memory, जो अभी मैंने बोला, right? And hence if we are doing swap in and swap out for any page memory, replace from main memory to secondary memory, something like that, we are for that we are doing swapping and swap out, that for that we are having page replacement algorithm. And majorly there are only uh, not only, but the major types of page replacement algorithms are FIFO, optimal page replacement, and the last one is least recently used page replacement algorithm. Okay, least recently used page replacement algorithm. So for today, I guess I have 2 minutes more, so we can discuss a bit more on this. Okay, and from the next lecture we will be seeing this particular page replacement algorithms, right? In next lecture we will be completing this particularly types of page replacement algorithm, not types of, but major types of page or commonly used page replacement algorithm. These are the commonly used page replacement algorithms, three commonly used. There are many others, but these are the most commonly used page replacement algorithm which we are going to see, right? So पेज रिप्लेसमेंट algorithm का मोटिव सिर्फ एक ही है, that as I stated in Hindi, and just before this statement I have stated in English also, that it is just to decrease your
page fault. That means a law or protocol to swap in and swap out the pages from the main memory. Okay, so this is your page replacement algorithm. And now in the next lecture we will see, understand this commonly used page replacement algorithm with some examples. Okay, any doubts still here? Any questions, any doubts? एटलीस्ट हाँ ना बोल सकते हो चैट में भी, माइक से भी. No, sir. Okay, so we can end here, and thank you for listening.